Dear friends, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, today in the morning session, in the spoken English class here at Genius Institute Lord's platform, we're going to have the second lecture consecutively about contractions. Contractions क्या होती हैं? Short forms. Short forms क्या होती हैं? Verbs की मुख्तसर हालतें. Short करके जिनको आप बोलते हैं, वो they are short forms. और क्यों बोली जाती हैं? They are because it looks nice. Looks like the native speakers expression, जैसे native speakers बात करते हैं उसका expression लगता है. And they also cause fluency in your spoken English. आपकी बोलचाल में fluency को भी represent करती हैं these contractions. So they're very important in spoken English. अगर आपने राइटिंग इंग्लिश के लिए काम करना है एंड यू वांट टू बिकम अ फॉर्मल एकेडमिक राइटर, फिर उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं करते. आइल्स में इन पर्टिकुलर ऐसे राइटिंग में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेटर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और वो भी इनफॉर्मल लेटर में. IELTS जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ थिंग्स. ये कहां आपने उसको यूटिलाइज करना है और कहां उसको इस्तेमाल नहीं करना है. सो contractions are the second lecture in consecutively today, and we have got some more valuable contractions today here in the class. The first one is he will. ये इसकी फुल फॉर्म है. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? He'll. He'll is the short form or the contracted form of he will. और हमारे पास सेंटेंस का क्या है? He'll catch the train. वो ट्रेन पकड़. He'll catch the train. You're using the first form after he'll. अगर he'll be होगा तो एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा. He'll catch the train. वो ट्रेन पकड़ेगा. अच्छा, he'll इसी तरह से she will हो तो she'll. It will हो तो it'll. He'll, she'll, I'll, will, they'll, you'll आप इस्तेमाल करते हैं. So हमारे पास एक सेंटेंस है. He'll catch the train. वो ट्रेन पकड़ेगा. Give me another example, please. He'll go to the supermarket. He'll go to the supermarket. वो supermarket जाएगा. Excellent, excellent, very nice. Any other sentence, please? He'll be here in a moment. He'll be here in a moment. He'll be here in the moment. वो यहां कुछ लम्हे में कुछ देर बाद यहां मौजूद होगा. He'll talk to you soon. वो आपसे जल्दी बात करेगा. He'll come to my expectations. वो मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा. He'll give you a wonderful solution. वो आपको एक जबरदस्त एक हल देगा. Any other sentence, please? He'll be right back. He'll be right back. बहुत अच्छा सेंटेंस है. He'll be right back. फौरन वापस आएगा. So he'll means not he'll only. She'll के साथ सेंटेंस ऐसे बनाने हैं. He'll, she'll, I'll, we'll, they'll, you'll, it'll be a fantastic competition. ये एक जबरदस्त मुकाबला होगा. It'll be my future. ये मेरा मुस्तकबिल होगा. It'll be my life in UK. ये मेरी जिंदगी होगी UK में. So तमाम के साथ आप बना सकते हैं sentences. और हमारे पास next जो expression है of contraction, वो है what will. अगर आप इसे what question word के साथ tag करते हैं तो what will की बजाय आप बोलेंगे what will. क्या बोलेंगे? What will. और मेरे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है. What will happen tomorrow. कल क्या होगा? What will happen tomorrow. कल क्या होगा? Now please your sentences. I want your participation as well, please. What will. What will go tomorrow? What will. Go tomorrow. No, I don't understand. This is the right sentence. What will be your future. आपका मुस्तकबिल क्या होगा? What will you have for dinner tonight? What will you have for dinner? Oh my goodness. Is it going to be a candlelight dinner? So this is really great. What will be in the dinner today? Tonight. आज रात dinner में क्या होगा? What will? What will be your game plan? What will be your game plan? आपका game plan क्या होगा? What will happen tomorrow night? क्या होगा कल रात? क्या होगा?
what will be the future of Pakistani cricket team in the next matches? You know about the World Cup, Pakistan has lost 4 matches consecutively, 4 in a row. It was quite disappointing, but Pakistan has won the match, probably the last night. It was quite pleasing. लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल वैसे ही होने जा रहा है जैसे हमेशा होता है, ये जीते ये हारे और वो टीम्स हार जाएं हम जीत जाएं. So it will be very unlikely you should win the matches like that. लेकिन anyway, it's Pakistan, it's an unpredictable team. कुछ भी हो सकता है. And cricket is unpredictable, and Pakistan cricket team is more unpredictable than cricket itself. All right, so please, what will हो गया? उसके बाद है जी who will ring the bell? Who will ring the door? दरवाजा कौन खटखटाएगा? Who will join at the party? The sentence is going to be who will win the match? Match कौन जीतेगा? Who will represent the class? Class की नुमाइंदगी कौन करेगा? Who will be the next president? Who will be the next president of my country? Yes, मेरे मुल्क का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? Yes. Who will be the next president? Who will be the next prime minister? More importantly speaking, of Pakistan. Who will continue the class? Who will continue the class until end? Right. Who will? कौन होगा की सेंस में है. और उससे what will not? ये will not, won't. Will not? Speak aloud please. Will not? Want. ये want और want दो डिफरेंट है. एक होता है WANT want, वो होता है चाहना. ये है want. Will not के लिए इस्तेमाल होता है. He want, she want, I want, we want, they want, you want. So sentence here is want का है. I won't help you. मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. I won't talk to you tomorrow. मैं कल आपसे बात नहीं करूंगा. I want, he won't come up to your expectations. वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेगा. They won't give us the solution. वो हमें हल नहीं देंगे. You won't go back to America. आप अमेरिका वापस नहीं जाएंगे. Want, will not के लिए इस्तेमाल किया आपने. You can make hundreds of sentences by using want. The next one is how is. How is actually the short form is house. क्या है? House. How's your father today? और how's your father now? बाबा की तबीयत कैसी है बाप की? How's your father now? How's your business? How's your day? How's your day? आपका दिन कैसा है? Oh, you have made my day. आपने मेरा दिन बना दिया है. और how's How's your siblings? How's your sibling? Sibling means brothers and sisters. How's कैसा है? How does she live without me? Oh my goodness. How's how she can live without me would be most कैसे मेरे से बगैर जिंदा रहेगी? रह लेगी यार. आप इतना इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश ना करो. Okay, house. So this was the contraction of how is house. The next one is who is. Who is the full form, and whose is the short form or the contracted form. Who's at the door? दरवाजे पे कौन है? Who is the owner of this restaurant? Who is the owner of this restaurant? इस रेस्टोरेंट का ऑनर कौन है? Who's behind the एक बंदे ने पूछा कहीं कि who is the owner of this restaurant? Actually, I want to complain. The food is not good. खाना अच्छा नहीं है. तो बुलाएं जरा अपने रेस्टोरेंट के मालिक को. उन्होंने कहा जी जो वेटर ने कहा कि मालिक जो है वो साथ वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं. So you can understand कि वाकई उसकी कंप्लेंट बनती थी. Who's your mentor? Who's your trainer? Who's your teacher? Who's your guide? Right? Who is gone here. The next one is after who is. What is very common. What's your name? What's your address? आपका एड्रेस क्या है? What's your plan? What's your hobby? What's your qualification? What's your destination? What's your problem? What's your problem, by the way? Oh, what's your problem? What's your family?
What's क्या है? What's your future plan? What's your favorite subject? शाबाश, very good sentence. Ultimately काशिफ साहब की तरफ से जुमला एक आया है, मुबारकबाद पेश करते सर हम आपको जी. What's your favorite dish? और what's के साथ आप hundreds and thousands of sentences बना सकते हैं. और आगे जी when is कब है. When is the full form and when's is the short form. So when's your birthday is a sentence. इसके बाद आपकी birthday कब है. When's कब है. When's your anniversary? When's your wedding anniversary. शादी की सालगिरह कब है आपकी. When's your big day. आपका शादी का दिन, बड़ा दिन जो होता है वो कब है. माशाल्लाह काफी बड़ा होता है और काफी भारी भी होता है. राइट. सो when's your big day. और क्या हो सकता है. When's your exam? When's your IELTS exam. आपका IELTS का इम्तहान कब है. When's कब है. और The class start. when's when will your class start होगा. आपकी क्लास कब शुरू होगी. when's your class कब है. ये हो सकता है जी. when's the convocation of the Genius Institute Lahore. इंशाल्लाह quite pretty soon. और उसके बाद है do not. ये फुल फॉर्म है और इसको क्या बोलेंगे. Don't. क्या बोलेंगे. Don't. अब एक सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't have a meticulous plan. I don't have any meticulous plan. खास किस्म का मेरे पास प्लान नहीं है. I don't wanna lie with you. Tell a lie जो है it's an old phrase. lie को ऐसा verb इस्तेमाल हम करते हैं. LIE लेटना भी और lie झूठ बोलना भी होता है. I don't like football. I don't like football. लेकिन पाकिस्तान की 4 मुसलसल नाकामियों क्रिकेट टीम के बाद ये भी कह सकते हैं लोग I don't know cricket. I don't like cricket. I don't like spicy food. I don't like spicy food. Do you like Thai or Mexican food? Yes. Okay, fine. I don't like. I don't like bitter gourd. I don't like. Bitter gourd. Who is that? Karela, bitter gourd. Oh my God! आप करेला और आपकी जैसा नक्चड़ा भी. Okay, right. I don't like bitter gourd. Okay, don't. Next one is does not, or the short form is. Doesn't. Speak aloud, please. Doesn't. She doesn't invite friends. वो दोस्तों का दावत नहीं देती है. She doesn't like it. वो इसे पसंद नहीं करती है. She doesn't play any games. She doesn't matter what he says. She doesn't. What he says. Please listen to him. She doesn't matter what he says. She doesn't matter what he says. वो इस बात की परवाह नहीं करती वो क्या कहता है. माशाल्लाह होना ऐसे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. डिपेंड करता है रिलेशनशिप के ऊपर. कुछ लोगों की बात आप बहुत परवाह करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते हैं. जो आपके अपने हैं उनकी आप बहुत परवाह करते हैं. It doesn't matter what she says. Doesn't. He doesn't. She doesn't. It doesn't. और इसी एक फर्द के नाम के साथ भी आप doesn't इस्तेमाल करेंगे. The child doesn't, the father doesn't, mother doesn't, और sister doesn't, brother doesn't, और teacher doesn't भी हो सकता है. So doesn't के साथ आपने sentence बनाया. The next one is 24th, last one today. Did not, इसका बनता है didn't, और लेकिन हम इसे बोलती हैं spoken fluent spoken English में didn't. क्या बोलेंगे. Didn't कहेंगे. Didn't भी ठीक है लेकिन didn't, और लेकिन आप didn't fluently, shortly, fast spoken English में आप इस तरह से इसको बोलती हैं. You didn't advise me. आपने मुझे मशवरा नहीं दिया या आपने मुझे नसीहत नहीं दी. You didn't advise me. Didn't के बाद हमेशा आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट फॉर्म. टेंस कौन सा बनता है ये. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल. और सेंटेंस में जब डिड का क्वेश्चन में या डिड नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी. फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो सेंटेंस था यू डिडंट एडवाइस मी. आपने मुझे नसीहत नहीं की. और You didn't play football. यू डिडंट प्ले फुटबॉल. आपने फुटबॉल नहीं खेला. He didn't help me. ही डिडंट हेल्प मी. उसने मेरी मदद नहीं की.
You didn't sensible before took the Genius Institute. ये सारा जुमला ही गलत है. Didn't के बाद आपने सेंसिबल एडजेक्टिव, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. ओके, यू डिडंट Complain me. You you didn't complain. didn't help me, You तुम didn't complain me. you didn't complain me, तुमने मेरी मदद शिकायत नहीं की. You didn't teach me, तुमने मुझे नहीं पढ़ाया. He didn't attend the wedding party, उसने पार्टी अटेंड नहीं की. We didn't play football, they didn't invite us, or you didn't help me at the time of need. हाँ, आपने मेरी वक्त पर मदद नहीं की. So, alright guys and girls, it was the lecture for today, and these are the contractions which we have practiced today in the class. They are he'll, what will, who will not, who is, or how is, and who is, what is, when is, don't, do not, does not, did not. Thank you very much indeed. God bless you all. Take care of yourself and see you shortly, please, in the next lecture.